जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी हो घड़ी। ओ जिंदगी ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, लाख गहरा
क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं, वो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लागे ना रे जियरा। Welcome back to my own show, your own show, Cricket with Mahesh Iyer. Ladies and gentlemen, भाइयों बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस शो पर जिसका नाम है क्रिकेट विद महेश अय्यर, जो हर फ्राइडे मैं ले आता हूँ शाम 7:15 से लेके करीबन 8:30 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना जिससे आज मैंने शो का आगाज किया, बहुत ही पुराना गाना बट मेरे दिल के बहुत ही करीब। इस दुनिया में मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत की बहुत बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है इन दिनों। एंड लेट्स जस्ट होप इस 1-1.25 घंटे में हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का साथ देंगे। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्रिकेट विद महेश अय्यर ओनली ऑन 103.3 ह्यूस्टन एफएम, a presentation of Rehan Siddiqui. You can listen to me, of course, on the 103.3 FM airwaves in the greater Houston area. You can listen to me anywhere in the world on houstonfm.com or the app, 103.3 Houston FM app. For those of you who are on Facebook, please feel free to search my name, Mahesh Iyer. You will see I am live on Facebook. And for those of you who are watching me on Facebook, a double thumbs up, a double victory sign, and a salute. Once again, thank you so much for joining me on this lovely Friday evening in the Houston area. ह्यूस्टन में अब बहारी मौसम हम कह सकते हैं आ चुका है। दिन में ऐसे गर्मी रहती है, लेकिन शाम में बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुनहरा मौसम, बहुत ही प्लेजेंट मौसम। हल्की बूंदें भी पड़ी अब जब मैं ड्राइव करके आ रहा था स्टूडियो में। बहुत ही सुंदर मौसम है। सो थैंक यू अगेन कि आपने ये शाम मेरे साथ बिताने के लिए एक टाइम निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वेरी मच वेलकम टू दिस शो। In this show, we talk about cricket, we enjoy cricket, the sport. Through cricket, we talk about different aspects of humanity, love, care, respect, sportsman spirit. हम सभी पे बातें करते हैं और मौजूदा हालात में जो क्रिकेट के बेहतरीन चीजें हो रही हैं, जिनको हम सभी जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो तमाशाई हैं, जो एंजॉय करते हैं, उनके लिए हम और गहराई से कुछ चंद लम्हों को एंजॉय करते हैं। हर बार मैं जनरली फेसबुक लाइव पर बहुत सारे रीसेंट क्रिकेट के वीडियोस भी चलाता हूं, तो आज भी शो उसी तरह होगा। पिछले कुछ हफ्तों से मेरा शो केवल T20 वर्ल्ड कप पर है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जिसका आगाज करीबन 1 महीने पहले फरवरी 7 को हुआ, बस आप अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। परसों यानी 8 तारीख को फाइनल होगी। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। यहाँ ह्यूस्टन में सवेरे 8:30 बजे से गेम होगी, क्योंकि कल रात को यहाँ डे लाइट सेविंग्स होगा। तो जो डे लाइट सेविंग्स के बारे में नहीं जान रहे थे, नोट कर ले अपने कैलेंडर्स। कल रात के बाद परसों सवेरे जब सोकर उठेंगे तो कम से कम 1 घंटा कम मिलेगा। वैसे नींद तो हम पूरी कर लेंगे क्योंकि संडे छुट्टी होती है ज्यादातर, लेकिन हाँ टाइम 1 घंटा आगे चला जाएगा। इसलिए मैच शुरू होगा सवेरे 8:30 बजे। सवेरे 8 बजे टॉस होगी ह्यूस्टन एरिया में। उस हिसाब से शाम के, वैसे तो इंडिया में कोई टाइम में तब्दीली नहीं होगी, शाम को 7 बजे गेम स्टार्ट होगी, शाम को 6:30 बजे टॉस होगी। तो ये है क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का एकदम लास्ट चरण, आखिरी पड़ाव जहां पर हम पहुंच चुके हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में जो टीम्स ने जो जतन की, जो मेहनत की, जो सक्सेस पाई, और कुछ टीम्स ने सक्सेस नहीं पाई, इतने सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स जो हमने देखे इस वर्ल्ड कप में,
उनको हमने एंजॉय किया। इस एक सवा घंटे में मैं उनको फिर से दोहराना चाहता था। हर बार कुछ न कुछ ले आता था। इस बार भी पिछले एक हफ्ते में जो 5 मैचेस हुए हैं, आज हम उनके शॉर्ट शॉर्ट हाइलाइट्स देखेंगे। 5 गेम्स जो हर एक गेम अपने हिसाब से काफी अहमियत रखता है। एवरी गेम वाज इंपॉर्टेंट, नो गेम has been a dead rubber. That's the beauty of this T20 World Cup. Every game has been such that till the very last day of the Super 8s, we did not know who the 4 finalists are going to be. And in fact, till the very last 2 days, we did not know who two of the Super 8 position teams would be. So it has been that close. Even before the last 2 days, I would say only England and South Africa had qualified, but we did not know who the other two teams were going to be. Was it going to be West Indies? Was it going to be India? Or was it going to be Pakistan? Or was it going to be New Zealand? It's going to be two out of those. Of course, now we know that the semi final lineup had India versus England and New Zealand वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो तो अभी हम जानते हैं, लेकिन आखिरी के कुछ दिनों तक द लाइनअप्स वर नॉट क्लियर। सो वी विल गो बैक इन टाइम, लिटिल मोर देन अ वीक, और आज का जो पहला मैच हम एंजॉय करेंगे वो है पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, जो हुआ कैंडी पालकिले में। बहुत ही शानदार मैच फरवरी 28 को हुआ। एंड इस मैच की बहुत सारी खासियत थी। मैच जब शुरू होने से पहले इक्वेशन बहुत ही सिंपल था, क्योंकि उसके एक दिन पहले यानी 27 तारीख को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था, और इस मैच को हमने पिछले फ्राइडे को एंजॉय किया। इसके हाइलाइट्स, जिसमें रेहान अहमद की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी थी, लास्ट में आकर के उन्होंने जीता दिया विल जैक्स के सहारे। तो इंग्लैंड ने एक तरह से पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन दे दिया था कि हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया है, अगर आप श्रीलंका को कम से कम 66-67 66-67 रन से हराएंगे, तो आप सुपर 8 से सेमीफाइनल में जा सकेंगे। ये स्टेक्स थे। उसमें अगर श्रीलंका पहले बैटिंग आई मीन सॉरी श्रीलंका पहले बॉलिंग करेगी, लेकिन अगर श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर दिया तो पाकिस्तान को जो भी टारगेट को चेस करना होगा वो करीबन 13 ओवर्स में चेस करना होगा। बहुत ही उम्दा मैच रहा, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया एंड पाकिस्तान को कहा कि आप पहले बल्लेबाजी करें, और पाकिस्तान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी स्टार्ट की। मेरे ख्याल से देयर बेस्ट ओपनिंग स्टैंड पूरे टूर्नामेंट में, जहां साहबजादा फरहान ने दूसरा शतक लगाया इस टूर्नामेंट का, और वो दुनिया के एकमात्र बैट्समैन बन गए, द ओनली बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 2 centuries in one edition of the World Cup. A big accomplishment by Saibzada Farhan, and also he broke a 12-year-old record of the legendary Virat Kohli in scoring the maximum number of runs in one edition of the World Cup. So excellent performance by Sabzada Farhan. Fakar Zaman had a big role. He was moved up the order. Of course, Babar Azam was dropped because of his strike rate issues, and Naseem Shah was brought in. So lots of changes for Pakistan, and they started well, but eventually they fell off. After being 170, was odd for no loss, they could only get to 212. वो मेरे ख्याल से बहुत ही कमजोर परफॉर्मेंस रही बैट के साथ। और फिर श्रीलंका को, उन्हें अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचना था तो उनको श्रीलंका को 148 के अंदर यानी 147 या कम रनों में ऑल आउट करना था या रोक के रखना था। लेकिन उस दिन दसन शानका ने अपनी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी पारी खेल गए वो। तो वो जीता तो नहीं पाए श्रीलंका को, लेकिन पाकिस्तान को सेमीफ़ाइनल में पहुँचने से वो रोक पाए। एनीवे, ये एक मैच थी, बहुत ही उम्दा मैच, बहुत ही क्लोज़ मैच, मेरे ख़्याल से इस टूर्नामेंट के अमंग द क्लोज़ेस्ट मैचेस में इस मैच को गिना जाएगा। तो आइए चलते हैं इस मैच की तरफ। हम इस मैच का एक छोटा-सा हाइलाइट्स आपके सामने पेश करेंगे। 2 मिनट दीजिएगा, मैं कैमरा को मूव करता हूँ towards the game, and then we will all sit back, relax, and enjoy this high stakes match between Sri Lanka and Pakistan. Kandy, February 28th.
Nice start, bring a bit of shape in, nice full delivery. And that's what he can do. He's a powerful man. Two is the call once again. It's a nice shot, placed it so well. That's the other thing that's been so special, other than another 50 for Sabzada Farhan, his fourth of this championship. Qualify for the semis, but they have a lot of pride. What a shot! What a shot from Sabzada Farhan! Gets it away fine. That'll be 50 for Fakhar Zaman. What a time to do it. He's first of the tournament, right when his country needed it. Oh, bowling, big inside edge. Straight hit, and that's going to be out. Well, that'll be collected at square leg. Well, almost a misfield. They run two, and he's done for the on strike. It's it for a run. And once again, the celebrations begin. What a tournament he's had. And gone. First ball dismissal. Full toss. That's area. It could be another dismissal. Salman Ali Agha. 3 dots. And that'll go probably over. And gone. So a series. Square leg. That's hit the pad and finger goes up. Here's the call. Usman Khan wants the strike. That's misfielded and so easy. Extra run conceded. No is the call, and I don't know. Oh, that's partly stopped. So this time there's got to be that suicidal second, and well, he gets there. The ball wasn't in the keeper's gloves when the stumps were broken, and so Pakistan end the innings. मेरे ख्याल से 212 बहुत ही कम थे. They should have gone to at least 240 with the kind of start they had. Very poor batting. Catch anything comes their way. Shaheen Shah Afridi to Nasanka. Immediately on a good length, so he's got a slip in play. That's the other question, Russ, is how much do Pakistan attack in the field? Gave himself room, and he gets him. Well bowled Nasanka. Straight down the ground, nicely struck. Just lobs it over long on. First Liver. Oh, that's smashed for 6. What a lift off. bowled it. Trying to keep it dry. Last ball, bowled. Addition to make a semi-final. We'll make that 48. That was a peach of a delivery. Ball, that's number 5. That's 6. Again, he's got enough. It's another 6. It's pumps him long. It hasn't been Tariq's night. New Zealand. Ratnaker pumps him down the ground. The crowd wants to clear it. It doesn't. Bowling into the wicket. Takes on 2 fielders. 6 more. They're still alive. 50 for the skipper. Smashed away over cover. One of the shots of the night. 2 have gone for 6. This one smashed away over cover. 3 in a row for Dustin in Sri Lanka. 6 off the last required. And it is a legal delivery. Afridi gets out of it. Dasun Shanaka does everything he can to steal a win. In the end, both teams are done for this World Cup. An amazing finish with a wideish ball. And as I said, one of the best matches in the World Cup. Unfortunately, Sri Lanka had already crashed out. They were not in the reckoning to make the semi-finals. But Dasun Shanaka, what an innings he played. He almost took Sri Lanka home. I think the last ball should have been a wide. He would have had another chance to at least get a boundary and get a super over. Then who knows? But anyway, it's all done and dusted. But one of the best games in the history of T20 internationals.
a game that saw Pakistan crash out of the World Cup and not being able to qualify for the semi-final. But a great match that Sri Lanka lost, and yet Pakistan could not make it. But as I said, the match was lost in the tail end of the batting of Pakistan innings. From 170 out for no loss, you don't end up at 212. You should have gone to 240, 250. That's when the equation would have been more in their favor. Anyway, जो हो गई बात हो गई. तो आगे बढ़ते हैं उससे. उसके बाद जो अगली मैच थी जिस पर बहुत सारी चीजें निर्भर नहीं थी, वो थी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच, जो अगले दिन हुई नई दिल्ली में 1 तारीख 1 मार्च को. इस मैच में कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका हार भी जाए तो वो सेमीफाइनल्स में ना पहुंचेगी. उन्होंने तो पहले क्वालिफाई कर दिया था, और अगर जिम्बाब्वे जीते तो वो पहुंचेगी. ये बात भी नहीं थी क्योंकि जिम्बाब्वे हैड ऑलरेडी क्रैश्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बिफोर दिस मैच. बट Zimbabwe has had a wonderful World Cup up to this point before the Super 8s. If you have forgotten, they beat Australia. They scored 169 for 2 in the league stages and did not allow Australia to score even 170. I think they bowled them out for 146 or so. So Zimbabwe had a dream run. They played extremely well. They qualified for the Super 8s and they would have wanted to sign off with a victory. And their captain, who else? सिकंदर रजा almost did that for them. तो हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने काफी मेन प्लेयर्स को रेस्ट किया था. बात सही है क्योंकि ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके थे. तो जैसे रबाडा नहीं खेल रहे थे, लुंगी गिडी नहीं खेल रहे थे, और कुछ बल्लेबाज भी टॉप ऑर्डर पे नहीं खेल रहे थे. फिर भी जिम्बाब्वे ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की और 153 153 पर 7 बनाए, जिसमें सिकंदर रजा ने 73 बनाए केवल 43 गेंदों में. और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए ऑलमोस्ट 18 ओवर लगे. उसमें भी सिकंदर रजा ने बॉलिंग से चमत्कार किया, 3 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच भी रहे. पर हाँ, साउथ अफ्रीका मैच जीत गया. फिर भी जिम्बाब्वे आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक they can be very proud. They can go with their heads held high. And let's not forget, Zimbabwe is going to host next year's One Day International World Cup. जी हाँ, अगले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम फ्रेम में जिम्बाब्वे, नमीबिया और साउथ अफ्रीका 50 ओवर का वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे. तो जिम्बाब्वे विल बी प्राउड होस्ट एंड वी कैन ओनली होप दैट उनकी परफॉर्मेंस उस वर्ल्ड कप में यहाँ से भी बेहतर हो. So let's sit back, relax and enjoy the second match of the last few days of the Super 8 stages. South Africa versus Zimbabwe, New Delhi. Earlier on, the toss happened, and it was Zimbabwe that decided to have a bat first in this Group 1 action. We've got 2 games today. It starts off with Zimbabwe taking on South Africa. Away straight away. There was just a little bit of hesitation there from Iyer. What a start this is from Zimbabwe. Kwenamapaka. Magnificent. Iyer Nokia. He's launched that hand, Sikandar Raza. Beautifully played. Brilliantly played. The elevation in that, but there's a fielder running in. Diego Brevis holds on to Askaya. Onto the leg side. Into the leg side, just dropped short. Confident by South Africa, and the umpire is confident too. Corbin Bosch finds a way through. Fine enough. The captain doing his best to pull his team to a good score. Read that well. That is wonderful by Raza. Premeditated. Dispatched. With authority. Opportunity.
It's a Skyer. Well held on to by David Miller. He finds the gap. Taken off is Brett Evans. Boss strikes. Nicely played. Push hard for the second. The throw. They'll complete 2 runs. That's a target for South Africa as they look for their 7th win on the trot here in the competition. 154 required. Stump to stump as well to start. Sikandaraza celebrates. Rickleton chooses to take the attack back. Don't know if that got up as much as he expected. He'll find a way through on the offside though. Akram was maybe a little quicker than he was expecting. Makes some room to free his arms. That's a nice shot. Slower ball, picked. Takes it. Oh! Big hit. Catches the shot. You're not going to catch that. What a shot. 6 up. And there's better than half getting it. That's a full get. That's a top shot. Gone! Sikandaraza is greeted by a maximum. Diego Brevis, there's a man underneath it. Another excellent catch from full toss, all the way for 6. Too much leg side. More opportunity for runs leg side this time around. Ball starting is over. Gets a hand to it. Take one. And they will come back for the second. Not the way that Zimbabwe would have wanted to have finished off their World Cup. No confirmation that South Africa have won this game. 5 wickets they've won by. Again, a very good game of cricket, and kudos to Zimbabwe for giving a tough fight to South Africa. It was not an easy victory by any stretch of the imagination. And definitely that man, Sikandar Raza, surely he's one of the best all-rounders in the world of cricket going around. Who can forget what he did in the PSL last year? For those of you who may not be aware, Sikandar Raza realized that he had to be back. He was, I believe, somewhere in the Middle East, and he had to be back playing PSL in the final. He literally, I don't recall all of the details. I think he was somewhere in the UK. He had to be driven by his friend to the airport and then transited in Dubai, arrived in Pakistan, middle of the night or early in the morning, few hours before the game, I don't remember, and then went on and gave a match-winning performance in the final of the PSL last year. He is that kind of a quality cricketer, high-quality skipper, fantastic, one of the best easily in the world going around. So fantastic all-round performance. He was the man of the match, but unfortunately वो मैच जीता नहीं पाए जिम्बाब्वे को. कोई हर्जा नहीं, जिम्बाब्वे ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की इस वर्ल्ड कप में, बड़े दिल वाली परफॉर्मेंस की, बड़े जान वाली परफॉर्मेंस की. साउथ अफ्रीका आगे पहुंच गया था वैसे ही सेमीफाइनल में. तो एनीवे, इसी बड़े दिल, बड़े जिगर, बड़े गुर्दे जैसे बोलते वाली परफॉर्मेंस के बाद हम लेते हैं एक सॉन्ग ब्रेक, जिसमें कहते हैं कि बनना है तो बड़े दिल वाला बनो. ऋषिदा का बहुत पुराना गाना, ऋषिदा टीना मुनीम पर फिल्माया गया हो. अभी बैठकर एंजॉय कर. La 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 la.
जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे तो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे तो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। बहुत ही खूबसूरत गाना। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। बड़े दिल वालों का खेल है ये क्रिकेट, जो दिल बड़ा रखते हैं, सभी भेदभाव, सभी डिस्क्रिमिनेशन से परे होकर, ऊपर होकर खेलते हैं, और हम सभी इंसानों को इतना एंटरटेनमेंट देते हैं। मैं सिकंदर रजा की बात कर रहा था, उससे पहले साहबजादा फरहान की बात कर रहा था, जिन्होंने 2 अर्धशतक बनाए इस वर्ल्ड कप में, और 10 उन शाणका की भी बात कर रहा था, जो ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली श्रीलंका को जीत के बहुत 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 करीब ले गए, पर नहीं जिता पाए। बड़े दिल वालों का खेल है, बड़ा दिल रखें तो जिंदगी में बहुत कुछ हम हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मी क्रिकेट with Mahesh Iyer on 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. अब क्रिकेट वर्ल्ड कप का कारवां आगे बढ़ाते हैं। 3 मैचेस जो आज मैं आपके साथ फिर हम एंजॉय करेंगे। आखिरी मैच जो अगला है, वो आखिरी मैच था सुपर 8 स्टेज का, और इस मैच के पहले जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का मैच था, इस मैच के पहले हम ये नहीं जानते थे कि इन दोनों में से कौन सी टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर जाएगी। पर हाँ, इतना जरूर जानते थे कि रन रेट्स, नेट रन रेट्स जो भी हों पिछले टाइम के, पिछले मैचेस के, उनका कोई मायना नहीं होने वाला था। इट डिड नॉट मैटर
whether West Indies was ahead of India or behind India in net run rate. All that mattered is when the two teams played each other at the Eden Gardens last Sunday, 1st of March. Whichever team wins goes into the semi final. Whichever team loses goes home. What a game that was. एक और बड़ा जिगर वाला, एक और बड़ा दिल वाला सामने आया उस गेम में, जिसका नाम है संजू सैमसन. संजू सैमसन के बारे में कुछ क्षण में मैं बात करूंगा, बट इन दैट मैच वेस्ट इंडीज एक्चुअली टॉस जीता सूर्य कुमार यादव ने, भारत के कप्तान ने. उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, विल बोल फर्स्ट. दे सेड वेस्ट इंडीज यू बैट. वेस्ट इंडीज scored a fairly good imposing total of 195, losing 4 wickets. काफी अच्छी पारी थी उनकी. एंड इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल्स के लिए और मैच जीतने के लिए 196 की जरूरत थी. 196 जो उन्होंने किया. 4 गेंदें रह गई थी, कर्टसी द बड़े दिल वाला संजू सैमसन, जिसका मुझे लगता है कि उस मैच से T20 की दुनिया में कहो या T20 वर्ल्ड कप में जैसे एक नया जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया. बहुत स्ट्रगल्स थे, बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर, बहुत स्ट्रगल्स. कई बार उनको मौका भी नहीं मिलता था क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर हो, विकेट कीपिंग हो, उसमें और दूसरे कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जा रहा था. और जब उनको मौका मिला तो उनका फॉर्म भी थोड़ा डिप हुआ. लेकिन इस मैच में जैसे कि संजू सैमसन ने दोबारा जन्म लिया और क्या शानदार बल्लेबाजी की. तो इस पूरे मैच को हम एंजॉय करेंगे. अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट मैचेस of this T20 World Cup that decided the last semi-finalist, the last slot that was still to be plugged in. And here it comes. Let's sit back, relax, and enjoy India versus West Indies, March 1st at the iconic Eden Gardens, Kolkata. Work out wow moments of the game. The coin fell in favour a little bit earlier of India, and they elected to bowl first. On target straight away, Matthew Hayden, thank you very much for sprinting up the stairs. That will go all the way for 6. Nice, very nice. Probably better. Miss it, should be out, should be out. Oh no, goodness me. Oh, that's a terrific strike. Found him right through his defence. Swings. And now, finger goes up. Easily taken. But he's gone to Akshar Patel, and has he got the wicket? No! Strikes first ball. Nonchalantly done. Oh, that's huge. Oh, what a shot that is. That's hit straight back. He's not bothering to run. Oh, that's gone through. That's it, should be taken. Put down. Oh, that's swung and swung long. Oh, that's beautifully played. He does. And a good finish. It's still 14 of the over. And this is going to be one hell of a chase. But this is what India need. When they come out, they need to get 196 runs. Remember, this is a knockout match. They've got their full 20 overs to get it. Yeah, that field tells me it's going to be straight, potentially even starting outside leg. You can't give him that. You cannot give him that length. That's all the way for 6.
Chance. Hetmeyer's chasing it. Hetmeyer underneath it and takes it. Shot. And that's partly going to be his downfall. He sliced that away. Oh, he picks that up. Starts with a short ball and gets the treatment. Oh, he climbs into that. And now 50. Richards there with the boundary. Got him, Shamar Joseph. Wow. Crunching. He's jumped on it. Everything he touches tonight. Long enough, long enough. He has hit that as powerfully. Just got up to it, Akil. Oh, he's put that down. Where's that gone? Oh, beautifully played. That's in the air. This time he takes it. And well struck first ball. Oh, that's in the gap this time. Oh, he goes big. Clears mid on and finishes it off. बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस संजू सैमसन की। जैसे मैंने कहा, मुझे लगा कि उनका पुनर्जन्म हो गया इस मैच के साथ। उमदा परफॉर्मेंस, but let us also not forget he was ably supported by Tilak Verma, Hardik Pandya and even Shivam Dubey. And when you see legends like Jason Holder dropping catches, you know destiny was not on the side of West Indies. Again, one of my favorite all-rounders, one of the best in terms of all-round cricket, not just in white ball, also in red ball. He was also a very good captain, Jason Holder. When he drops catches, you feel, okay, it's just not meant to be that West Indies goes into the semi-final. Anyway, वही हुआ, पर hats off to Sanju Samson. बहुत ही शानदार innings, बहुत ही शानदार पारी. He never played for a century or anything. All he wanted was to be there and take India home, take India over the finish line. Fantastic performance by Sanju Samson, fantastic performance by all of the supporting staff and the team players who supported Sanju Samson in helping India get into the semi-final. If you all recall, Bharat जब साउथ अफ्रीका के साथ हार गया था, देन ऐसे बातें हो रही थी कि भारत शायद सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए, शायद सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई ना कर पाए, बट एनीवे उन कंटिन्यूअसली 3 मैचेस जीतकर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अब हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स के 2 मैचेस। तो हमने देख लिया कि सेमीफाइनल लाइनअप्स जो थे वो थे, पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड 4 तारीख को कोलकाता में, और दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अगले दिन मुंबई 5 तारीख। मेरे ख्याल से ये स्केड्यूलिंग का कारण ये था, 2 बैक टू बैक, ये कारण था कि 3 तारीख को होली का पावन पर्व था, द फेस्टिवल ऑफ होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स fell on the 3rd, and so we couldn't really have a game. Otherwise, I think the first semi-final would have been held on March 3rd. But anyway, 2 great semi-finals. So before we start to enjoy semi-final है boss, तो semi-final का बिगुल तो जरूर बनता है। क्या बोलते हो? एक और बार। सेमीफाइनल का बिगुल बजा, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। तो चलते हैं पहले सेमीफाइनल की तरफ, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल के पहले
अगर आपको याद होगा पिछले 1.5 साल पहले एक्चुअली 2024 मई जून में जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें साउथ अफ्रीका केवल एक मैच हारा था, वो फाइनल था भारत के खिलाफ। इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के पहले साउथ अफ्रीका ने कोई भी मैच नहीं हारा था। सो द एक्सपेक्टेशन वाज साउथ अफ्रीका is one of the favorites to win this year's World Cup. And it was the right expectation. I personally expected them to go into the finals, win the finals, because they had everything that a quality all round team could ask for in terms of talent, skill, capabilities. And on top of that, they had had some tough wins. They had a match against Afghanistan with 2 super overs. They had some easy wins over tough teams. They thrashed India by, I believe, almost 60, 70 odd runs. So South Africa was hands down favorite to go through against New Zealand into the final. New Zealand themselves, if you all know, we talked about this a few minutes ago. New Zealand had one match which was rained out against Pakistan, so they missed out on getting those points. They lost to England in the last game of the Super 8s when they thought they were going to win. It was looking like New Zealand आराम से जीत जाएगा और उसी दिन वो अपनी सेमीफाइनल की जगह बना लेगा, तो वो नहीं हुआ और उनको जैसे कि एक बैकडोर एंट्री मिल गई थी जब श्रीलंका हारते हुए भी 47 से कम रन से हारा पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड कठिन गेम्स और थोड़ा बहुत बैड लक के साथ यहां पहुंची है, तो शायद वो आगे न जा पाए। लेकिन ये क्रिकेट है भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स। जैसे रमीज राजा ने रिसेंटली रमीज स्पीक्स में एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, वो यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये खेल ऐसा है जो आपको रुलाता भी है, हंसाता भी है। और उस दिन इस खेल ने साउथ अफ्रीका जैसी मंझी टीम को काफी रुस्वा कर दिया। पहले सेमीफाइनल में इतनी बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने, मिचेल सैंटनर कप्तान ने, और उन्होंने तुरंत बॉलिंग का फैसला किया। और जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है उसमें ऐसे समझ में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैरान हो गए क्योंकि उनकी तैयारी मेंटली यही थी कि वो टॉस जीत जाएंगे और वो पहले बॉलिंग करेंगे, लेकिन उनको पहले बल्लेबाजी करनी। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गेम उन्होंने आधा मेंटली वहीं हार दिया था। रन्स भी कम बने, विकेट्स भी बहुत दे दिए पावर प्ले में, और फिर न्यूजीलैंड की तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी की फिन एलन। तो देखते हैं इस मैच के हाइलाइट्स, एंजॉय करते हैं। फर्स्ट सेमीफाइनल के हाइलाइट्स साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जो खेला गया था कुल। Work out the wow moments of the game. New Zealand won the toss. They will bowl first. There's a bit of dew around already. That might be a factor. But eventually it's what you do with bat and ball, and teams batting first have a decent record here as well. That is today, of course. South Africa take on New Zealand. They've had some encounters in the World Cup, haven't they? First runs already. Good note. That's the shot he loves playing. Easy. Oh, it's gone straight up this time. No timing. Mid-on. Mid-on takes the catch. Oh, up in the air. That's 2 in 2. Ooh, the outside edge. Oh, it was in the air. It's hard. Wonderful. Oh, pace. Fielder takes the catch. Fingers underneath here. Keep it rolling, keep it rolling. I can see the fingers underneath. Yeah, thank you. I'm ready with my decision for the big screen. Right, so look at the decision. What is it then? It's out. Bang! Out of there. Not quite off the middle. Phillips. Oh, down. Gone for it.
It's gone straight up. New Zealand Black Caps. That is his strength. And that's in the gap. That's gone for 4-2. Fielder will watch it sail over. No. Gets the wicket. Then he gets hold of it. One more. 50 comes up for Marco Jansen. Push the boundaries back to the Hoogly. Henry with the wicket. He chips it and finds the fielder. They're going to run hard for the second. The throw's at the striker's end and he's all right. 170 to get from 120 balls. Only one of them is going to Ahmedabad. Long on a mid-wicket area. So I think you can expose him if you get that ball to swing late. That's what he's looking for. Straighten up a little bit on that left-hander. They had catches in place. Up it goes. Fielders look at each other. Quinton de Kock calls for it. He has to make a long way. What a lovely stroke that is. This will give New Zealand so much confidence. That's magnificent hitting. Off it goes again. It'll throw the bat. That will go the distance too. Shot. Where is it? Over him. Shot. That'll be 4 more. Finn Allen gets to a half century. Bang! Out of there. Bowl him. Shot. We've seen power from New Zealand all the way through this innings. Fielder was up in the inner ring. This innings has been unbelievable. They've played that shot a lot today. The boundaries. That's huge. Bit of action as well. And bingo! It's the fastest T20 100 in the World Cup ever for the men. 169 for 8, not bad, given what was happening. बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी फिन एलन की, जैसे आपने कमेंटेटर डैनी मॉरिसन से भी सुना. फास्टेस्ट T20 वर्ल्ड कप 100, 33 गेंदों में उन्होंने शतक लगाई. पर जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका मेंटली उन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए थे इस गेम में. जैसे ही वो टॉस हारे, उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी. ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आधा गेम वहीं पर हार दिया था. इसीलिए न्यूजीलैंड, they were playing absolutely like a tiger which has smelled blood. They knew South Africa was down. They pounced on them. They were merciless. And as you can see from the scorecard, in 13 overs, one delivery short of 13 overs, New Zealand scored 173 while losing only 1 wicket. It was an absolute annihilation. My heart does go out to South Africa because a year and a half ago, little under 2 years ago at Barbados, Bridgetown, I was at the stadium. Of course, I loved the fact that India won, but even there, it was a heartbreak for South Africa. After playing so well and needing only 30 runs in the last 5 overs, they crumbled and fell short by 6 or 7 runs. So definitely, South Africa, मेरे ख्याल से अभी भी mentally कहीं ना कहीं crunch moments में games हार जाता है. The good thing is last year they won the World Test Championship final thanks to Themba Bavuma and Aiden Markram. और मेरे ख्याल से अगले साल जब वो host रहेंगे तो definitely वो और भी तैयार रहेंगे. And we all in the world of cricket want to see South Africa win one of these white ball tournaments.
but it was not to be this time, unfortunately. कोई बात नहीं, congratulations to New Zealand. They made it to the final. They were the first team to qualify for the final. अब चलते हैं जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ उसके तरफ, जो कल खेला गया था मुंबई में, ऑफ कोर्स भारत के हिसाब से परसों खेला गया था शाम को. What a match that was! England versus India in Mumbai at the iconic Wankhede Stadium. वहां पर टॉस जीता इंग्लैंड ने, कहा कि हम पहले गेंदबाजी करें. अगेन संजू सैमसन और कई बैट्समैन ने शानदार कॉन्ट्रीब्यूशंस किए अराउंड संजू सैमसन, और भारत ने 253 बना दिए. इसको चेस करना किसी भी गेम में बहुत मुश्किल है. नॉकआउट गेम में जहां डू और डाई होता है, आप हार गए तो टूर्नामेंट के बाहर चले गए, उसमें तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है. फिर भी जेकब बेथल, 23 मेरे ख्याल से 22-23 साल का नौजवान, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप की बेस्ट पारी खेल गए. ठीक है, फिन एलन ने 33 गेंदों में सेंचुरी बनाई, लेकिन फिन एलन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था. जेकब बेथल के ऊपर जो प्रेशर था वो इमेंस था, और उन्होंने ऐसे किया जैसे वो 80 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 100 सालों से क्रिकेट देख रहे हैं. ऐसी बल्लेबाजी की. Surely a talent to watch out for in the long run. So a great match, a great game of cricket that India scraped through, winning by 7 runs, and they made it to the final. Let's sit back, relax, and enjoy the second semi-final, England versus India, Mumbai, Wankhede Stadium. Workato wow moments of the game. It is a heavyweight clash. The toss was won by England. They elected to field first here at the Wankhede Stadium in Mumbai. It's over the top of Midon. Oh, that's big. He's taken it. Oh, that's in the air. Should be taken. And Sanju Samson. That's in the air. Put down. That's huge. Cut away. Beautifully played. He tosses it up. He could well go into out. Slug sweep. Oh, picked up. Wide. Down again. Toe end of the bat. It should be taken. Long off comes in. It is taken. Shivam Dubé. Will Jacks now. Sanju Samson. And tries to go big again. Slow ball. Slug sweep. Hey! Now. Uppercut. Slower ball. Long on. Tries to get there. Can't. Run out chance. Gone. He's lost his bat. It's gone straight up. Can Long On get there? No. Hit leg side over Long On up. Yorker. Flat. Straight. Full and straight. This time Hardik wants 2. I'm not sure he's going to get back. He shouldn't get back. Slow it down just a little bit to avoid. Megs everyone. It goes through Chakravarti. It goes through Butler. And they'll come back for 2. And that is an excellent innings. They will need 254 runs to get to that final. So here goes Ashdip. He's away. That's up in the air. An opportunity. A wicket close ball. Now that's well struck. That's over. Mid-off. Oh, that's beautifully bowled, first ball. Oh, what a catch. It's gone high. Goes again. Got him! Oh, that's a lovely shot. Just like that. The roar says it all! Good Jacks. Quick single. Oh.
That is another World Cup half century. There's no one out there. Got a height on it. Has it got the distance? Oh, that has gone miles. Lovely. That looks to be outstanding. And there he goes. That's hit straight. And he's played it nicely. Swings. And clears the man in the deep. That's in the air. And taken in the deep. That's hit straight. And stopped on the boundary. Overton goes back for the second. Bethel is run out. That's well struck. That's high. Goes once again over the rope. But it's India who march into the semi-final. In the end, they win by 7 runs. Blazing innings from Sanju Samson. Again, a fantastic game of cricket, a very high scoring, a high octane game. Eventually, India coming out winning by 7 runs. इस गेम में जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था वो संजू सैमसन को दिया गया था. मेरे ख्याल से अगर मैं उस पैनल में होता और अगर किसी बैट्समैन को देना होता मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो मैं अवार्ड देता जेकब बेथल को, क्योंकि उन्होंने जो पारी खेली वो ज्यादा प्रेशर वाली पारी थी. ऐसा लग रहा था कि जब इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर फिल सॉल्ट का हो, जॉश बटलर ने थोड़ा बेहतर खेला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप से, हैरी ब्रुक हो, सभी आउट हो गए थे. और उसके बाद 22-23 साल का नौजवान इतनी बढ़िया पारी, इतनी मैच्योर पारी, इतनी धुआंधार पारी खेल गया. चलो इंग्लैंड को जीता नहीं पाया पर इतनी अच्छी पारी खेल गया, तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच बैट्समैन के हिसाब से उसको होना था. अगर किसी बॉलर को देना था तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है और मैं भी सहमत हूँ, जसप्रीत बुमराह को देना चाहिए था. एक तो उन्होंने हैरी ब्रुक को आउट किया, बहुत ही शानदार स्लोअर डिलीवरी, उससे उन्होंने उनको आउट किया था. और 16वें और 18वें ओवर में केवल 6 और 8 रन ऐसे कुछ दिए थे उन्होंने, जिसके कारण बाजी भारत के तरफ भाग गई. तो आई थिंक बॉलर्स, अगर किसी बॉलर को चुनना है तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह. लेकिन अगर मुझे किसी एक बंदे को चुनना है जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दूं तो मेरा वोट एक्चुअली जाता है अक्षर पटेल को. अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया और उन्होंने 3 कैचेस लिए. वो 3 कैच में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड था फिल सॉल्ट वाला, लेकिन हैरी ब्रुक वाला जनरेशनल कैच था. शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतर कैच हो, सबसे बढ़िया कैच हो. और तीसरा जो विल जैक्स का कैच था, वो उसमें तो उनका नाम भी नहीं आएगा, उनको क्रेडिट भी नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कैच पकड़कर, क्योंकि उन्होंने कैच पकड़ा और चूंकि वो बाउंड्री के ऊपर जा रहे थे, उन्होंने रिले दे दिया शिवम दुबे को, तो नाम शिवम दुबे का आएगा कि उन्होंने कैच लिया है, बट एक्चुअली कैच लिया था अक्षर पटेल ने. तो अक्षर पटेल ने जो इम्पैक्ट किया है मेरे ख्याल से इस गेम पर, वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है जीत की तरफ. एनीवे संजू सैमसन को दिया गया क्योंकि उनकी पारी ने भी रन्स बनाए भारत के लिए, तो इसीलिए भारत जीता. बात सही है, पर जस्ट एन ओपिनियन ऑन माय बिट that if I was involved, I probably would have said, okay, let's consider Akshar Patel. Anyway, Ben or Vayo Dosto, this was what I had for today's show. So it is going to be a grand finale coming up in 2 days' time, less than 2 days, 1.5 days almost. 8:30 a.m. Sunday local Houston time. या 1 घंटे की आगे पीछे हो जाएगी because of the daylight savings. But that's when we will have the grand final between New Zealand and India at the magnificent Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. I will be tuned in. Hopefully, all is well, and I will be tuned in. And I hope all of you cricket fans out here will also be tuned in to that particular game. And one hopes it's a cracker. A lot of people are debating as to who's going to win. On paper, Team India looks to be, I would say, at least maybe 60-40 favorites. Yeah. I don't think any more than that because New Zealand is a very, very dangerous team, an extremely dangerous team. We have seen them perform well in the knockouts. We have seen them perform well in the finals. So definitely there is no reason why they can't do it. They've got a very balanced all-round side. They've got some real hard-hitting power hitters. We saw
Tim Seifert, we saw Finn Allen, Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Glenn Phillips, you name it. एक के बाद एक धुआंधार बल्लेबाज हैं, and also they have the advantage that they played India in a 5-match series before the World Cup. So they are very familiar with the conditions in India. I don't recall if any of the games was in Ahmedabad, but surely they will know the conditions. And they are very well oiled machinery, excellent captaincy by Mitchell Santner all around. They've got excellent bowlers, Matt Henry, Lockie Ferguson, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड टीम एंड फील्डिंग तो उनकी लाजवाब रहती है। जब मैं बहुत छोटा सा तब से न्यूजीलैंड जब बाकी चीजों में आगे नहीं थी, फील्डिंग में सबसे आगे रहती थी। तो आई थिंक all of these things make them a very strong contender. But on the other side, Surya Kumar and his team have been firing on all cylinders. They've come through the hard yards. They had to win, I think, 3 or 4 games in a row to get to the final. So they are battle hardened. बहुत सारी बातें ये भी हो रही है कि क्या अभिषेक शर्मा को खिलाना है या वरुण चक्रवर्ती को खिलाना है फाइनल में। मेरे ख्याल से दोनों को खिलाना है। आई थिंक अब कॉम्बिनेशन नहीं चेंज होनी चाहिए और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव इसी पर रहेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा हो, वरुण चक्रवर्ती हो, बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी है, वेरी वेरी केपेबल एंड हु नोस, जैसे पिछले टाइम के वर्ल्ड कप में विराट कोहली की परफॉर्मेंस थ्रू आउट द कप वाज नॉट गुड और रोहित शर्मा को पूछा गया और रोहित शर्मा ने कहा कि सेमीफाइनल्स के बाद उन्होंने कहा कि शायद फाइनल्स में विराट कोहली बहुत बड़ी तरह से चल जाएंगे और गेम जीताएंगे और एग्जैक्टली यही बात हुई। इंडिया अगर 176 तक पहुंच सका था 1.5 साल पहले, वो विराट कोहली की शानदार जानदार पारी के कारण। हु नोस, इस फाइनल में अभिषेक शर्मा सेंचुरी मार जाए, वरुण चक्रवर्ती 3-4 विकेट्स ले लें, तो भारत की टीम भी बहुत ही मजबूत है। हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल हो, ऑलराउंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह दुनिया में अकेले खड़े हैं बॉलिंग कैपेबिलिटीज में। अर्शदीप हो जो मेरे ख्याल से बहुत ही उमदा बॉलिंग करते हैं, स्टार्ट में हो, मिडिल में हो, डेथ में हो, आउटस्टैंडिंग वरुण का दिन हो तो वो किसी भी बैट्समैन, राइट हैंडर हो, लेफ्ट हैंडर हो, चकमा दे सकते हैं उनको। और बैटिंग में संजू सैमसन हो, अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार भी थोड़े ओवरड्यू है। पहले मैच में उन्होंने धुआंधार अच्छी बैटिंग की, रिस्ट्रेन्ड एंड देन धुआंधार 82 मेरे ख्याल से बनाए थे यूएसए के खिलाफ। शायद ये फाइनल में उनका मौका हो। टूर्नामेंट के स्टार्ट में, आगाज में बहुत बढ़िया किया, शायद अंत में भी बहुत बढ़िया उन्हीं का टाइम हो। Who knows? So let's hope that it's a great game of cricket. I think it is 60-40 at best at this time, maybe more 50-50, who knows, or 55-45 in favor of India. But let's hope that it's a great game of cricket, not a one-sided game. At the end of it, cricket becomes the greatest winner. With that, ladies and gentlemen, signing off with a couple of songs that talk to the merits of being a Sikandar. Who is a Sikandar? हारीबाजी को जो जीतता है। एंड लेट्स सी किस टीम के सिकंदर मिलकर अपने टीम का झंडा ऊंचा लहरा देते हैं। इसी दुआ के साथ कि सभी खुश रहो, सुखी रहो, एक दूसरों में खुशी बांटो, प्यार बांटो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मी ऑन क्रिकेट विद महेश अय्यर ओनली ऑन 103.3 Houston FM, a presentation of Rehan Siddiqui. If all goes well, I'll be back here Friday next week with the final report card and some final set of videos to enjoy on the T20 World Cup 2026 held across Sri Lanka and India. So long, stay blessed. वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। चाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, चाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मरीना अगर हौसला खुदा भी होता है, जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, 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 लहरा दो। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। प्यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब याद करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। दुनिया को लगी नाच, तो कोई